काफी टाइम से इजराइल और ईरान के बीच में हालात काफी नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान अब फ्रंट फुट पे इस वॉर को ले जाना चाहता है और क्लियरली उन्होंने सुर्ख झंडा लगा के एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया है कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला वो इजराइल से जरूर लेंगे। आईआरजीसी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें आईआरजीसी ने बताया कि अली खामनाई के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसराइल को सजा दी जाएगी इस्माइल हानिया के मौत की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आईआरजीसी की तरफ से सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए हैं जिसमें उन्होंने अपने सारे शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को शो किया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिकन और स्पेनिश शिप्स को ईरानियन ड्रोन्स ने अपने निशाने पे लिया है। Since the beginning of this war, the Hamas and Islamic Jihad terrorist organizations have been systematically abusing civilian population and infrastructures in Gaza for their terrorist activities against the State of Israel. This includes Hamas' massive network of underground tunnels which go under towns, hospitals, mosques, schools, and UN facilities, and are used by terrorists to command attacks, store weapons, and hold Israeli hostages captive. It also includes hospitals across the Gaza Strip, which have been repeatedly infiltrated and weaponized by Hamas and Islamic Jihad, and where terrorists' tunnel shafts were found. Increasingly, in recent months, Hamas has focused on exploiting school buildings, often where civilians are sheltering inside, to use them as military facilities, command and control centers, for storing weapons, and to execute terror attacks. Over the last few weeks, our intelligence has been closely monitoring an active Hamas and Islamic Jihad military facility, where approximately 24 Hamas and Islamic Jihad militants were operating. The names of 19 of these terrorists operating in this compound were published by us today. We also have intelligence indications that the terrorist Ashraf Judah, Islamic Jihad's brigade commander of the central camps, was at the compound. This military facility was embedded inside the Al Tabain school building in Gaza City. After we received clear intelligence of the threat posed by these terrorists, and in accordance with international humanitarian law, we took numerous steps to mitigate the risk to civilians, including using aerial surveillance prior to the strike, and selecting very precise munitions to avoid civilian casualties. Early this morning, the IDF conducted a precision strike against the terrorists in one specific building of the compound, an area that, according to our intelligence, no women and children were present. You can see in a video published by us today that the compound is still intact and that there is no significant cratering or damage to the main structure of the compound. This pattern of systematic abuse of schools for military activities by Hamas and Islamic Jihad endangers both Gazans and Israeli civilians. It must be condemned by the international community. Following the strike, the Hamas-run Government Information Office in Gaza published an unverified casualty count, which was then shared around the world. These figures do not distinguish between combatants and non-combatants, and they do not match the information held by the IDF. Yahya Sinwar, the mastermind behind October 7th, the day where Hamas brutally massacred innocent Israelis and started this war, and the man last week appointed as Hamas political leader, stated himself that a higher Palestinian death count helps Hamas in its war goals.
Where Israel sees harm to civilians as a tragedy, Hamas sees harm to civilians as a strategy. The IDF will continue to operate in accordance with international humanitarian law in order to dismantle Hamas military capabilities and in order to bring back home all our 115 hostages, men, women, children, and the elderly, who are being held in captive for over 300 days in horrific conditions. We are operating to create the conditions to bring them back home. We call on the international community to do everything they can to fulfill this goal. यूक्रेन रशिया जंग में ईरान अपने ड्रोन से पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुका है और कंटिन्यूअसली अपनी ड्रोन पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी बीच दुनिया की पूरी लीडरशिप इसी खतरे में है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है और इस बार जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देगा, क्योंकि इस वॉर में अब न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ईरान के अंडरग्राउंड दूसरा ईरान है जिसमें उन्होंने अपना सारा मिलिट्री का सामान रखा है, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, या चाहे वो वेपन्स हो या मिसाइल्स हो, सारा ईरान के अंडरग्राउंड है। वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है और इस बार ये मिडिल ईस्ट से शुरू हो जाएगा। इसीलिए दुनिया की लीडरशिप यही कोशिश कर रही है कि इन टेंशन्स को बढ़ने से रोका जाए, दुनिया किसी तबाही का शिकार ना हो। अब दुनिया की लीडरशिप इन टेंशन्स को रोकने में कैसा रोल निभाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए नैनोवा टाइम्स।